ओम नमो भगवताय शुद्ध ज्ञाने कमूर्तया निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये Welcome to the session. Sahil Bhaiya. Hello, Sahil Bhaiya, am I audible? Yes. Okay. Welcome to everyone. So today we have a very special guest with us. We know him as Sahil Bhaiya, and he is an IIT Kharagpur graduate. He is a certified and globally renowned counselor and astrology expert. He has traveled across the world to conduct various astrology workshops and seminars. He conducts art of living programs such as Yes Plus, breath and meditation workshop, youth programs, Shishi Yoga, wellness programs, and de-addiction programs. So we all know him, and it's an honor that we are able to be with him today. So in just a few minutes. Yes, I am here. Yeah. Hello, Sahil Bhaiya. Welcome. It's an honor. Bhaiya, I just request the host to just mute all the other participants or make me Yes, co-host. for some time maybe we can mute. So that I can, yeah. So Bhaiya, let's start the session, and we just want to know more about the astrology and the science behind it. And why should a normal person believe in an astrology from a scientific perspective? How does it help someone in helping in going ahead in life? Over to you, Bhaiya. Great. Maybe you can make me host or spotlight me. Yeah, I think it's in Abhishek's control. So currently, so we are getting 2023 predictions. Where you can continue, I'll just make sure that you're a host. Yeah. Am I visible on the screen? Yeah, Yes. you're visible. I request now I everyone to think please mute your speak because it's creating a little bit disturbance. I request everyone to please mute them so that Bhaiya can speak. Okay. Yes, you can start. So let us start, and first of all, a very happy new year to everyone. 2023, it's so fast. अभी ऐसा ही लग रहा है कि कुछ ही दिन पहले I have taken this session. Welcome 2022, and it has been 1 year. So best wishes to everybody for this 2023. And let's start with very basic. बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा प्रशांत ने कि why should a normal person believe in astrology? Okay. My internet is little weak. Yeah, I'm in Bangalore ashram today, so थोड़ा सा fluctuation हो सकता है. But let's see how you get this. Where you are audible. Yeah. Yes. So you know, किसी भी इंसान की लाइफ पे एट अ टाइम 5 चीजों का इफेक्ट बहुत प्रोमिनेंट पड़ता है, एंड इट इज वेरी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक आल्सो. सबसे पहला फूड, व्हाट ही ईट्स. व्हाट यू ईट डिटरमाइंस ऑफ योर एनर्जी. आप उसी दिन कुछ सात्विक खाना, कुछ बहुत एनर्जेटिक खाना खाओ और उसी दिन आप कोको कोला पी लो, पिज्जा बर्गर खा लो, तो यू विल सी द डिफरेंस इन योर एनर्जी. फर्स्ट इज फूड. सेकंड इज प्लेस. Like I'm in Bangalore ashram, abhi it's such a festive season, so automatically मतलब you feel happy, you feel excited at some places. और बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे जैसे आप किसी जेल में या हॉस्पिटल में जाओ
So you might not feel the same. Even in the time of New Year or some festive season, you will feel the difference in your behavior and your feelings also. Third is people. What kind of people are around you? It also has a very significant impact. Okay. Fourth is time, and fifth is karma. So time and karma is something which is actually not in your hand. Karma, I mean past karmas. Okay. So here this astrology comes into place. कि किसी इंसान का समय, and it is also very cyclic in nature. It's like किसी राशि का समय कुछ समय अच्छा चलता है, फिर थोड़े टाइम बाद उसका गड़बड़ हो जाता है, फिर दूसरी राशि का जिसका खराब चल रहा होता है उसका अच्छा चलता है. सो टाइम डू हैव अ वेरी पावरफुल इम्पैक्ट ऑन अवर लाइफ. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? ये आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं किसी काम के लिए, लेकिन उनका समय नहीं होता उस चीज का, तो they are not able to succeed. But there are a few people who don't work that hard, and luckily they get success in a lot of things. I agree. I would just like to interrupt you on this. Yeah. Just to validate the point that you're saying, I have met many successful people in my life and whom I admire a lot. And one thing common to all of them is mostly that they say that कि यार ये ना मुझे नहीं पता कैसे हो गया, it's luck. And I've seen this. Exactly. Very good. So see, so lot of people of us, जितने भी आप बड़े great इंसानों से मिलोगे ना, तो you will ask them कि how did it happen? They say it just happened. And recently I have taken a session, उसमें I have done case study also, cricket match ki how like a particular person played so well that day, while a particular very good player doesn't play well that day. So that is the place where somehow the planetary influences come into picture. Okay. And again, karma. So karma is also something which your horoscope, your birth chart is like your report card. Okay. So that's how, like, some people are born very intelligent. They understand things very fast. Everybody has seen them. Some people are born very good looking. They have a very healthy body. And there are certain people who work hard, go to gym daily, still like they don't reach their level. Some people have very low immunity. They fall sick very early, while there are some people who can eat also some random food, still they are very healthy. Agree. So this is what time and karma has a role to play. I just want to ask one question that I have in my mind is, गुरुजी कहते हैं कि उद्यमी, जो बंदा उद्यमी नहीं होगा वो कभी अपना भाग्य प्राप्त नहीं कर सकता. तो उसमें कहाँ पे कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का क्या वो है, तो इसका क्या, अगर आप इफ कैन एलाबोरेट ऑन मोर अबाउट इट. जैसे गुरुजी कहते हैं कि इफ यू डोंट, जो बंदा उद्यमी नहीं है वो अपना भाग्य प्राप्त नहीं कर पाएगा. इस पे इफ यू कैन एलाबोरेट अ बिट. Can you repeat that question, first part, what you were saying? जो उद्यमी नहीं है, I mean जो मेहनती नहीं है वो कभी अपना भाग्य प्राप्त नहीं कर सकता. Yeah, so it is very obvious. See, suppose you are very intelligent, okay, but if you won't study, then how will you clear the exam? Like suppose आपकी लॉटरी निकलना तय है किसी को, लेकिन आपने लॉटरी का टिकट ही नहीं खरीदा, तो कैसे आपके पास लॉटरी निकलेगी? कैसा पैसे आएगा आपके घर पे? So this is what, like, you have to put action, you have to do action, otherwise nothing will happen. Like, I don't know कितने लोगों ने संयम किया है यहाँ पे. Anybody has done संयम? Yeah. तो उसमें बड़ा अच्छा गुरुजी बहुत अच्छे एग्जांपल देते हैं कि कर्म करोगे तो खाओगे मेवा, अदरवाइज ऐसे मुंह खोल के बैठे रहोगे, गुलाब जामुन थोड़ी आ जाएगा मुंह में. So this is very practical. भाई ये बात हम कह सकते हैं क्या, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हम ये बात कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी हम कर्म करते हैं वही हमारी नेक्स्ट बर्थ, और कहीं ना कहीं चार्ट में इट विल रिफ्लेक्ट इन द नेक्स्ट बर्थ, और वी कैन मेक चेंजेस इन द चार्ट बाय आवर एफर्ट. यस, कहीं ना कहीं ये सही भी है, और कहीं ना कहीं देयर आर लाइक उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं. ओके, सो लेट मी जस्ट गो विद द फ्लो अभी.
5-6 मिनट, उसके बाद we will make this as a discussion. Okay. So सबसे ज्यादा लोगों को जानने की इच्छा है कि 2023, what is 2023 bringing to us, right? So 2023 का सम करोगे, जैसे 2022 की कौन से प्लेनेट का ईयर था? Can anybody write in the chat box which planet was governing in 2022? Venus, okay. Shukra, okay. Anybody else? Let me see कितने लोगों को याद है last year I have discussed in detail. Mercury, Moon. नहीं, it was Venus. Venus. 2 + 2 + 2 6. So 6 Venus का number है. Yeah, Shukra, Neetaji. Okay, and this year the number is 7. 2 + 2 + 3. So can anybody tell 7 कौन से planet से connected है? Ketu. Okay. Anybody else? Ketu. Correct. Okay, so Ketu. So Ketu is a very tricky planet. You will be very happy to hear that कि जो सबसे ज्यादा spiritual planet है, that is actually Ketu. And Ketu also represent occult sciences and all the mysticism, और एकदम जो मतलब core spirituality और जितने भी शास्त्र मंत्रों की chanting, all these things are represented by Ketu. So it is a very good news I wanted to share with all the devotees. Like जो लोग भी spiritual है ना, this year will bring so much of good news for them. That is for sure. Ketu is the planet of spirituality. Okay, so last year का नाम था शुभ कृत्य. Okay, शुभ means good for all. Okay, so you must have noticed कि कैसे पिछले 2021-20 ये 2 साल कितने ज्यादा टफ थे, सारा मार्केट डाउन था, सारी इंडस्ट्री बंद थी, और एकदम से लास्ट ईयर ऑल द एवरीथिंग स्टार्टेड, वर्ल्ड कप हुआ, everything come back in line. Okay, so 2023 Shobha Krutiya. So there is a catch. There is a difference between Shobha and Shobha Krutiya. So Shobha is like the person who really deserves will get the respect, will get the luck, will get the good things. So this is the speciality of this year, Shobha Krutiya. So there are certain people, certain zodiac signs. अभी एक राशि पे भी I'll come to it. कि जो पिछले काफी साल से मेहनत कर रहे थे, they were struggling, they were doing a lot of good work, but not getting that result. So this is the year which will bring all the results of your hard work, especially in terms of spirituality. It will bring a lot of knowledge. And Ketu, since Ketu represent occult science, तो जितने लोगों को भी astrology, वास्तु, mantras, chanting, and all these occult science इन सब में interest था, तो this is like a bonus year for them. इस ईयर की एनर्जी ही इसी तरह की है कि if you will do that, then it is like a remedy for you. अगर किसी भी इंसान का टफ टाइम चल रहा हो इस साल, तो just start learning any occult science, whether it is astrology, vastu, numerology, अपना chanting हो गया, Upanishad, whatever. Even doing our course is also, Sayyam course is also like an occult science. You will learn Patanjali Yoga Sutras. So just do that if somebody is going through any tough phase, and you will see the difference. You are learning it also much faster than what you were learning in the previous year, and you are more happy, you are getting more interest. Like last year Venus का year था, तो you had more general interest in travel, sightseeing, और थोड़ी सी मतलब relax, chill out वाली activities में. Okay, but this year is the Ketu's year, so naturally people will have more interest in the spirituality. So this is all about this year, like what are the main things of this year. Okay, अभी आते हैं राशियों पे. So everybody in here know their signs. Let me see कितने लोगों को अपनी राशि बताया. चंद्र राशि. Okay, there are 47 people, and in YouTube also you can write. बहुत सारे लोग पहली बार सेशन, या किसी को क्वेश्चन पूछना है तो they can put in the chat box. And today I have a lot of guru stories also. So let's see. I'll take this Rashi wala very quickly. Then we will jump on to guru stories.
Bhaiya, is it possible to just quickly, if someone is not able to know their Rashi, is it a way we can just communicate quickly? या तो किसी को अपनी राशि जाननी है तो डाउनलोड एनी ऑफ द astrology app and just enter your data, or you can search find your moon sign. So I'm speaking about the Chandra Rashi. Okay. हाँ, तो I'll just go, बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा, वैसे तो आई कैन एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग for this particular sign, but still I'll try to make it short as possible because there's a lot of things planned for this session. Okay, so सबसे पहले आते हैं हम एरीज, मेष राशि. तो मोस्टली आई हैव कंसिडर्ड 4 प्लैनेट्स जो सबसे मेन होते हैं और सबसे स्लो मूव होते हैं, राहु, केतु, गुरु एंड शनि. So for Aries people, Rahu and Ketu is falling in the 1-7 axis. Rahu is in Aries राशि, तो लग्न में राहु आ रहा है, चंद्र चार्ट में देखेंगे अगर तो. Then Jupiter is coming in the 12th house and Shani is coming in the 11th house. Okay, so Shani is in the 11th house. It will bring money, but it will be little slow. So I'll just share like how much benefit this particular main big planets are bringing this year for various signs. So for Aries, this year is bringing about 30 to 60% benefit. So it is like average. It is okay to average. Then coming to Taurus. So for Taurus, Rahu is coming in the 12th house. Guru is coming in the 11th house. And Shani is coming in the 10th house. So it will delay your success in career little bit, but overall it is decent. So it can be considered at 50 to 80% good results it will bring, because Jupiter in the 11th house, it is quite good. It will bring a lot of gains in terms of spirituality also. Now let's come to Gemini. So for Gemini, Jupiter is coming in the 10th house, mean Rashi mein hai Guru. So it will come in the 10th house. Rahu, Aries will come in the 11th house. And Shani will come in the 9th house. So सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा है इस 2023 में, सबसे ज्यादा बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है, that is for Gemini. It's like 60 to 90% benefit. So for Gemini people, this year will be very good mostly. Still हर राशि में अराउंड 3 नक्षत्र होते हैं, तो आपकी कौन सी महादशा अंतदशा चल रही हो तो उससे भी इफेक्ट आएगा डेफिनेटली, लेकिन इन जनरल भाई थंब रूल आई एम टेलिंग, फॉर Gemini it will be good. For Cancer people, Jupiter is coming in the 9th house. Luck के हाउस में आ रहा है. Shani is coming in the 8th house, occult sciences, and Rahu is coming in the 10th house. तो कैंसर वालों को वर्क के रिलेटेड ट्रैवल करने को काफी मिलेगा. इनफैक्ट कैंसर पीपल कैन गो टू फॉरेन कंट्रीज आल्सो दिस ईयर. ऑन साइट वगैरह के बड़े अच्छे चांसेस है. सो ओवरऑल कैंसर के लिए इट्स लाइक 40 to 70%. इट इज अगेन a decent good year. For Leo, Jupiter is coming in the 8th house. Saturn in coming in the 7th house and Rahu is coming in the 9th house. तो तीनों ही प्लेनेट थोड़े से, राहु भी 9th हाउस में लक में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन लाएगा. 9th हाउस इज द हाउस ऑफ लक. So for Leo it can be little tough at times. So I have rated it like benefit 30 to 50% for Leo. Then for similarly, then for Virgo also, it is Saturn is coming in the 6th house, Rahu is in the 12th house. So Guru is coming in the 7th house. So Virgo में जो लोग भी शादी करना चाहते हैं तो it is very good for them. It will give blessings in relationship and marriage, but health और difficulties थोड़ी सी रहेंगी. तो overall it is average for Virgo, 30 to 60% benefit. For Libra also it is similar, 30 to 60% benefit. And Scorpio. For Scorpio, Saturn is coming in the 4th house, Jupiter in the 5th house, which is very good. Direct CD 11th house. And Rahu in the 6th house, which means थोड़े से health issues आ सकते हैं.
nervous system से related, but still overall it is quite good, 40 to 70% good for Scorpio people. For Sagittarius, it is little tough. Rahu is coming in the fifth house, which is tricky. Jupiter is good in the fourth house and Saturn in the third house. तो Sagittarius के लिए भी 20 to 50%. It's average for Sagittarius. बाकी तीनों राशि मकर, कुंभ और मीन राशि. तो मकर राशि के लिए अच्छी खबर है कि Saturn will move to Aquarius. जनवरी में शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे. तो मकर राशि का पिछले 5 साल से 7.5 चल रहा था, तो अभी सेटिंग फेज चालू हो जाएगा, विच विल बी comparatively better than last 5 years. So their good times will start coming. Okay. For Aquarius, शनि will be sitting in the Aquarius. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शनि की स्वयं राशि है Aquarius, तो इसलिए शायद रिजल्ट अच्छे दे, इट विल बी लाइट. बट शनि इज न्यायाधीश, तो सभी राशियों में उन्होंने कुछ थोड़ा सा मटेरियल लाइफ में टफ टाइम दिया है. तो एक्वेरियस में भी it will give some tough times. And Jupiter is coming in the second house. Rahu is coming in the third house. Okay, so for Capricorn it is like average 30 to 60%. हाँ, Capricorn के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट उपाय है कि शनि दूसरे भाव में बैठ रहा है. दूसरा भाव होता है स्पीच का. तो Capricorn people should take care of their speech very importantly. एकदम सॉफ्ट पोलाइटली बोले, क्योंकि शनि की वजह से उनकी स्पीच हार्श हो जाएगी कभी कभार, इस वजह से उनके इश्यूज रिलेशनशिप और ऑफिस में पॉसिबल है. एक्वेरियस के लिए अगेन इट इज एवरेज और थोड़ा सा बिलो एवरेज, 7.5 एकदम पीक पे. एंड Pisces के लिए इट इज मोस्ट ट्रिकी एक्चुअली. राहु एंड शनि इज कमिंग इन द सेकंड हाउस एंड 12th हाउस. 12th हाउस में शनि की वजह से एक्सपेंसेस काफी बढ़ जाएंगे. And second house Rahu is also tricky. So Pisces is the sign which I'll suggest सबसे ज्यादा उनको थोड़ा सा ख्याल रखने का जरूरत है. And they should listen to Guru Puja, I would say daily, और शनि की भी पूजा, it is very good for them. And हर 2-3 महीनों में Pisces people should do AMP, क्योंकि उनकी 7.5 से स्टार्ट होने वाली है. And starting phase of 7.5 with Shani in the 12th and Rahu in the second can be little difficult. So this was some of the, in short, analysis of all the 12 signs for this year. और ये अप्रैल तक ज्यादा वैलिड है. उसके बाद जुपिटर विल बी मूविंग इन द एरीज, तो चीजें थोड़ी सी चेंज होगी. तो व्हाट आई हैव सेड राइट नाउ, इट्स वैलिड फॉर नेक्स्ट 4 months. Okay, now we can take some question. उसके बाद we will move to some guru story. Yeah. So Prashant, take some crisp question, छोटे से crisp type के question. Otherwise, the session will become lengthy. Sure, भैया. Yeah, mostly it is, I mean, Rashi specific. So I'll just say the general question, which is Lalita Sahasranam and Vishnu Sahasranam का क्या फर्क पड़ता है on astrology? If in a crisp way you can explain. Yes, so these are all mantras. ठीक है. तो क्या रहता है कि हर प्लेनेट की कोई ना कोई वाइब्रेशन, कोई ना कोई साउंड्स होती है. इफ यू विल वॉच माय प्रीवियस वीडियोस मे बी, so you will understand. तो ललिता सहस्रनाम is connected to Venus planet and Vishnu सहस्रनाम is connected to Jupiter also and Mercury also. Okay, so जिनकी कुंडली में Jupiter और Mercury वीक है, they can chant Vishnu सहस्रनाम, and जिनका Venus का थोड़ा सा इशू है, they can chant Lalita Sahasranam on Fridays. That is very good. भैया, as you said, thank you so much. इसका you have explained very well. सबको must have learned a lot regarding their rashis, but except the Gemini, I think most of them are like in a phase कि हाँ हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं बोल. नहीं, most of them are average और above average. थोड़ा सा next ये साल मैंने बताया ना, starting वाला भी point है कि those who are spiritual, those who are following spirituality, anyways it will be good for them, even for Pisces also. Okay, so both the things you have to take care. Okay, so let me share some very good guru stories. अभी एक ही बड़ा अच्छा experience है. So I was doing advanced course in the ashram अभी recently, New Year पे. So यज्ञशाला, पहले यज्ञशाला में Guruji used to take satsang, and during my IIT days
क्या रहता था, 2013-14 की बात है, तो हम लोग जाते थे आश्रम, तो गुरुजी क्या कहते थे, कभी कभार जैसे पूजा हो गई तो बोल देते थे कि यू कम, दर्शन, अभी मैं सबको दर्शन दूंगा, ही विल मीट एवरीबॉडी। अभी भी चंडी होमा वगैरह पे करते थे दूर से, उस समय तो गेट खोल के एकदम पीपल यूज टू गो नियर गुरुदेव and have his darshan. So I still remember, it's like I was sitting in the front in the satsang time, and Gurudev said this thing कि now we can have satsang, and there was around 5 to 10, 5 से 10,000 लोग थे यज्ञशाला में, और सबकी सत्संग, सब आ रहे गुरु जी पे। जनरली लोग 3-4 चीजें ही मानते हैं, गुरु जी शादी का इशू है, या फिर बिजनेस का इशू है, या फिर बच्चों का कुछ इशू है। सो ये 2-3 चीजें सब आके गुरुजी से बोल रहे हैं, एंड गुरुजी वाज लिस्टिंग, हाँ ठीक है करो वैसे ऐसे। ओके, सो आई वाज जस्ट वाचिंग दिस, और मेरे को लग रहा था यार ये 10-15 हजार लोग हैं, तो 5-6 घंटा लग जाएगा इसमें। तो व्हाट आई डिड, मैंने सोचा कि चलो लेट्स सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, सो आई वेंट एट द टॉप ऑफ यज्ञशाला एंड आई सॉ दैट, आई वाज लुकिंग एट द सीन, तो आई वाज ऑब्जर्विंग इतने सारे लोग कहने वाले हैं, देयर वर सो मेनी पीपल हु वर सेइंग समथिंग कि गुरुजी दिस, गुरुजी दैट, गुरुजी दिस, गुरुजी दैट, थाउजेंड्स ऑफ पीपल दैट टाइम आल्सो, और सुनने वाला केवल एक। हैव यू नोटिस, इट्स नॉट इन द आश्रम, इन जनरल आल्सो, पूरी दुनिया में कितने सारे कहने वाले, बट सुनने वाला केवल एक। तो यू नो, दैट डे आई रियलाइज कि सुनने वाले में रब बसता है। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? हम लोग को कोई कुछ सुनाता है तो हम लोग साइड कर देते हैं कि नहीं सुनना ये वो, बट यू नो, सुनने वाले में रब बसता है। यू विल सी गुरुदेव, you will see all those people who listen to people and try to help them, so you will experience this ki that energy comes to them. So always remember this thing. This is like, you know, that day only I decided ki I want to share his load. I don't know कितना share कर पा रहा हूँ, but I also want to listen to some people, क्योंकि अभी तो वो सबको नहीं सुन सकते, उस समय तो अभी थोड़ा आसान था। So I was learning astrology that time, some आश्रम में offline astrology courses होते थे। So that was my sankalpa that time, and that time also I used to meet hundreds और गुरुजी तो बहुत ही लोग मिलते हैं still। It's not about me, it's in general I want to share कि listen to people, सुनो लोगों को, and you will experience that divinity in you. God resides in the listener. So this was something which I realized अभी आश्रम में, so I wanted to share कि Wow, सुनो, Vedant, you true. will find something good. Yeah, Prashant. This is there भैया कि जब भी हम किसी को सुनते हैं, most of the times we are like in a hurry and we want to Yes. get things done, and we are listening but at a passive level. We are not just comforting the other person जो होता है। तो by this we can, yes, it's a divine quality actually to listen to someone with all ears and Just remember this line, सुनने में रब बसता है। Just remember this. I tell you, your life is done. केवल आप इतने ही कर दोगे। You know, so the best part of this is कि जब आप सुनते हो ना लोगों को, तब आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। Don't feel you have any problem or you have any issue, because you stay happy. It gives you happiness, you know, listening to other people problem. आपको लगता है कि अरे you start helping others, then your focus on your problem goes away. So it is a very good thing. So you know, today in satsang, Bhanu Dedi was taking satsang today, New Year special. So she was sharing one very nice story. She was sharing कि जो गुरु होता है, self होता है and God होता है ना, उसमें कुछ अंतर नहीं होता है। She gave one very nice and true example, which like I don't know, कोई पुराना गुरुजी के साथ रहता हो तो they must be knowing कि एक बार क्या हुआ, विनोद मेनन जी एक बेंगलोर के टीचर है, he is a very active DSN teacher, विनोद मेनन जी। तो he was going with Gurudev to some village, Bangalore, कर्नाटका में ही किसी गांव की साइड जा रहे थे वो, और गुरुजी ने एकदम से गाड़ी रोकी और बोला कि 457 रुपीज, एग्जैक्टली 457 रुपीज निकाले। ओके,
और बोला कि ये घर में जाओ, इस लेडी को दे दो ये 457 रुपीज। विनोद मेनन जी को बोला, अभी भी आपको कोई मिल जाए ना, विनोद मेनन जी बेंगलोर में ही रहते हैं, तो यू आस्क हिम कि ऐसा हुआ था क्या, तो ही विल शेयर। तो बोले कि ठीक है, वी वेंट देयर, और वो घर में गए तो देखा कि दैट लेडी वाज प्रेइंग टू काली माता। काली माता का बड़ा सा फोटो थी उनके सामने, एंड शी वाज प्रेइंग कि डॉक्टर ने पर्चा लिख के दिया, हर हस्बैंड वाज इल, तो पर्चा लिख के दिया है और उसमें दवाई दी है, और उसका जो सम टोटल था दैट वाज 457 रुपीज, एंड शी वाज नॉट हैविंग दैट मनी। ओके, तो विनोद भैया ने दिया एंड ही वाज सरप्राइज कि यार एग्जैक्ट दैट अमाउंट, हाउ इट इज पॉसिबल, एकदम एग्जैक्टली मतलब पर्चे पे वो सम टोटल हो रखा 457, एंड गुरुदेव हैज गिवन 457 रुपीज। तो ठीक है, वो लेडी को तो मिल गए पैसे, शी वॉज वेरी हैप्पी, शी ब्लेस विनोद भैया, एंड शी केम बैक टू गुरुदेव। विनोद भैया केम बैक टू गुरुदेव, ही वॉज वेरी सरप्राइज, वो नए नए थे उस टाइम, ही डिडंट न्यू एनीथिंग। तो बोले कि गुरुजी ये शी wanted 457 rupees only for his medicines of her husband, but how you knew that? And Guruji was just smiling and he said one thing, कि all calls come to me. All calls come to me. ऐसा नहीं है कि जैसे कोई आर्ट ऑफ लिविंग का नहीं है, कोई ऐसे नहीं है तो कोई भगवान की पूजा कर रहा है, बट दिस इज व्हाट भानु दीदी वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि सेल्फ गॉड एंड गुरु, देयर इज नो डिफरेंस, इट इज इन ह्यूमन बॉडी। अभी वो ह्यूमन बॉडी में, सो ही बिहेव्स लाइक द ह्यूमन बीइंग, उनमें कुछ कुछ चीजें हैं बहुत सारी ह्यूमन जैसी, बट ही हैज दैट गुरु तत्वा इनसाइड हिम, which is you read Guru Gita sometime. Guru Gita में बड़े अच्छे से explain किया है कि like how powerful is that Guru. Okay, so अभी एक बड़ी recent स्टोरी है, ये पोलैंड की स्टोरी है, अभी गुरुजी कनाडा में है ना, अभी लास्ट वीक की स्टोरी है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वन ऑफ माय फ्रेंड हु वाज विद गुरुदेव शेयर्ड इट, कि पोलैंड में एक टीचर है पैट्रिक, बड़ा सीनियर टीचर, एंड आई नो हिम पर्सनली, आई वाज इन जर्मन आश्रम, so I knew him, पैट्रिक से मेरी बात भी हुई है, I have his number also। तो he was very ill, कुछ तो उसके पेट में प्रॉब्लम हो गई थी, एंड डॉक्टर है सजेस्टेड कि ऑपरेशन करवाओ जितना जल्दी हो सके। हाँ पढ़ते रहना पड़ता। ओके, सो और उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा। ओके, तो पैट्रिक ने बोला कि नहीं, मैं गुरुजी से पूछे बिना ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। ठीक है, और उसने गुरुजी का नंबर भी कभी कभार चेंज करते हैं, तो उसने बड़ी मुश्किल से, ही इज लाइक एनटीसी, एक और है थॉमस, तो उससे गुरुजी का नंबर मांगा, तो गुरुजी का नंबर मिल नहीं रहा था उस टाइम पे, पता नहीं क्या हुआ, तो एक किसी वॉलंटियर का गुरुजी के पास, जो नियरेस्ट वॉलंटियर था, तो उसका नंबर लिया उसने और कॉल किया, और गुरुजी पिक्ड अप द कॉल एंड ही सेड, हाँ पैट्रिक। पैट्रिक बोला, गुरुजी दिस इशू इज देयर एंड डॉक्टर इज सजेस्टिंग ऑपरेशन। बोला हाँ हाँ करा लो ऑपरेशन, ठीक हो जाएगा सब, गो अहेड, माय ब्लेसिंग्स। एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि अरे वाह, मैंने तो कॉल मिलाया और लग गया कॉल, बढ़िया। नाउ आई टेल यू द बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी। जो वॉलंटियर था जिसके पास फोन आया, तो गुरुजी हैज कॉल्ड हिम। अच्छा हाँ, दिस वाज द केस, गुरुजी का सब नंबर सबके पास नहीं रहता है, दैट वाज द थिंग, तो वहां पे शायद किसी के पास था नहीं, तो दैट्स व्हाई दे फाउंड द वॉलंटियर्स कॉन्टैक्ट। तो फिर गुरुजी ने उस वॉलंटियर को कॉल किया 1 घंटे पहले कि तुझे अभी पोलैंड से एक कॉल आने वाला है पैट्रिक का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, यू हैव टू पिक इट अप। फिर आधे घंटे बाद फिर कॉल किया कि यू, अच्छा व्हाट यू डू, यू कम दिस साइड, आई एम हियर एंड यू गिव द कॉल टू मी एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू पिक इट अप। फिर जब कॉल आने वाला था, देन वॉलंटियर इज नियर गुरुदेव, एंड व्हाट गुरुदेव डिड, ही टुक फोन फ्रॉम द वॉलंटियर, ही टोल्ड कि तुम मिस भी कर सकते हो कॉल को, तो फोन मेरे को ही दे दो, फोन आएगा तो मैं उठा लूंगा। एंड ही टुक द फोन एंड द फोन केम एंड ही आंसर्ड इट। तो isn't this amazing, एकदम I was like amazing, something really nice. Yeah, it is near to impossible, and it is impossible to think that someone
who's taking care of so many people and इतने सारे हैं, still individuality is there कि हर एक के मतलब he's so connected to us on a subtle way. Yeah, especially like that's why I suggest कि you all should become an art of living teacher. You know, become an art of living teacher is like giving your house, your body is like your house on rent for Guru grace to flow through it. So that's why like I would suggest कि 2023 is very good for spirituality anyways. So you all should take this sankalpa to become an art of living teacher. ओके तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जब मैं गुरुजी के साथ था जर्मन आश्रम में. सो दिस इज वेरी फनी. सो ऐसा नहीं गुरुदेव अच्छा ही करते हैं, ही समटाइम्स डू अपोजिट आल्सो टू मेनी पीपल हु मतलब कुछ कभी कभार आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बन के हैं, कुछ का ईगो बढ़ जाता है, कुछ हो जाता है, तो ही डू समथिंग टू चेंज मेक देम बेटर. मतलब करते वो सब ग्रो करने के लिए है, बट समटाइम ही डू सम ट्रिकी थिंग्स आल्सो. सो यू नो आई वाज इन जर्मन आश्रम, सो देयर वाज अ टीचर their German teacher. Okay, so he used to drive very fast और उसको बड़ा proud था कि I am a very good driver. ठीक है, he was very proud of that. तो क्या रहता है, गुरुदेव जब भी यूएस जाते हैं तो he first come to Frankfurt. यूएस जाने के लिए जनरली फ्लाइट जा रहा था फ्रैंकफर्ट से, फिर न्यूयॉर्क की जाती है, तो देयर इज अ लेओवर. तो व्हाट गुरुदेव डू, फ्रैंकफर्ट पे उतरते हैं, फिर वहां से he go to German ashram, stay there for some time, and he go to US. So that time I was there in German ashram. So what happened, Gurudev was coming and it was a surprise visit, बहुत planned नहीं था, तो there was like very less teacher at that point. ठीक है, 1-2 दिन में ही plan हुई थी trip. So there was one senior admin, he told that guy who was a very best driver, he used to call, and I was there and one more teacher was there. So they told me, बोले कि Frankfurt जाके you bring Gurudev in the car. फ्रैंकफर्ट से ये जर्मन आश्रम कितना ही दूर था, आई थिंक 2-3 घंटा लगता है कार में. ओके, सो देयर वाज 2 कार. सो एनीवेज, सो गुरुदेव के साथ वो ही जो दैट टीचर वाज देयर, सो ही ब्रॉट गुरुदेव इन द कार एंड ही वाज लाइक 30-35, वेरी न्यू टीचर. तो हम सभी लोग बोले गुरुदेव के, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी, यू नो, यू मीट गुरुदेव समटाइम्स और आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही नॉर्मल सा कोई आदमी खड़ा हुआ है. दैट डे आई स्टिल रिमेंबर कि वी वर सर्चिंग फॉर गुरुदेव एट द एयरपोर्ट एंड ही वाज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर एंड जस्ट लाइक अ वेरी सिंपल पर्सन, नो ऑरा नो देयर, मतलब वेरी लुकिंग वेरी सिंपल. एंड समडे यू सी हिम, ही विल लुक लाइक अ एकदम गॉड. सो दिस इज आल्सो वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट गुरुदेव, ही नोज अननेसेसरी अटेंशन कब नहीं लेनी है, कब कैसे रहना है. So this is my experience. I have seen this many times. Okay, chalo continue this story. Then Gurudev came with him in the car and he was driving very fast. और वो रास्ता भी है ना थोड़ा सा पहाड़ और थोड़ा सा tricky है. तो there was a turn और उसने ऐसे करके गाड़ी निकाली और सामने से ही एक और गाड़ी आ गई and it was hardly that much space कि 2 गाड़ियां निकल पाए. तो एकदम मतलब आई वुड से कि 1 फीट डिस्टेंस होगा उसके इधर खाई थी एंड बोथ द कार पास, और किसी ने हॉर्न भी नहीं बजाया. यूरोप में हॉर्न भी नहीं बजते, इट इज नॉट अलाउड. नागमन इज फ्रॉम नेदरलैंड्स, ही मस्ट बी नोइंग. ओके, सो एकदम वी वर लाइक ओ माय गॉड, आज तो गए. देन यू नो, गुरुदेव किसी को क्रिटिसाइज भी करना होता है ना, दिस इज रियली ब्यूटीफुल. तो बड़े ही प्यार से गाते, बड़े ही प्यार से. तो ही जस्ट ऐसे कह के उसके कंधे पे हाथ रखा एंड बोले कि आई थॉट यू वर अ वेरी गुड ड्राइवर. कैन यू इमेजिन? My God. So that is why it is like he takes care so well, you know. हर तरह से हर चीज का ध्यान रखते हैं. So if you are on the path and you are doing his work, then he'll make sure he will take care of you. Yeah, many people have experienced ego crashing many times. अभी एक और recent story I just heard. So
there was this lady Indu Jain. She was the director of Times of India Group. Times of India Group तो सभी जानते होंगे, Times of India newspaper. Okay, so it is around 15 years back. तब ये यज्ञशाला बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही थी आश्रम में. So what happened? She came to ashram to meet Gurudev. Okay, and काफी सारे सीनियर टीचर सेक्रेटरी वगैरह थे वहां पे. तो शी टोल्ड कि गुरुदेव आई वांट टू डोनेट समथिंग, और उन्होंने चेक निकाला और उसमें करोड़ों का अमाउंट डाला. मतलब देयर वाज 7-8 zeros, 2-3 करोड़ समथिंग. ही गेव इट टू गुरुदेव कि गुरुदेव ये यज्ञशाला एंड व्हाटएवर कुछ तो बन रहा था, उसके लिए आई वांट टू डू दिस डोनेशन. So you know what Gurudev did? Gurudev refused to take the check. Well, no, it is okay. It is not required right now. And she was very shocked, and all the teachers were very shocked कि गुरुदेव इतनी मेहनत से फंड रेजिंग हो रही है, पैसा इकट्ठा हो रहा है, इतने सारे करोड़ रुपए आ रहे हैं, and you declined this offer. तो फिर वो बोली गुरुदेव, it is, then how can I help you? Well, I'll tell you when time will come. Okay, and then she left. तो सारे टीचर्स एकदम, सेक्रेटरी वगैरह एकदम उछल गए. बोले कि गुरुदेव इससे तो कितना काम हो जाता, अपने सारे बहुत सारी चीजें बन जाती एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट में पैसा लग जाता. तो यू नो व्हाट गुरुदेव टोल्ड? गुरुदेव टोल्ड कि that was easier for her. That's why I denied it. And you know, later on, like you know, these people are very busy, director, CEO. So सबसे जो उनका precious होता है, that is their time. So Gurudev said कि I'll ask her time. So you know, Gurudev called her for an advanced course, and she did an advanced course in Bangalore Ashram in Vishal Lakshmi Mandap. So if you know any senior teacher, they will tell you this story in Dubai. And like so many CEO and director come and do advanced courses here. And yeah, इसी से एक और बहुत ही पुरानी स्टोरी I just recalled it. सुननी है ना सबको? कितना एकदम कैमरे भी बंद हो गए अभी, क्या everybody awake? Okay, so last story. I think पहले तो they were asking, I have like इकट्ठा करी थी इस बात में मैंने स्टोरी की, I'll make this guru story session. Maybe Abhishek, Prashant, you will be going to Abhishek ना, तो they can cut some of the stories क्योंकि stories are something which people enjoy more. Yeah. No, we are Okay, so loving this it. is also very funny, very interesting story. My voice break, yeah. Yeah. Yes, we are. Okay, Clear. back. Yeah. So there was a guy, P.S. Larson. Okay, PL जिसको बोलते थे, PL नाम था. तो कनाडा आश्रम जब मॉन्ट्रियल आश्रम चालू हुआ था ना, तो ही वाज लाइक हेड ऑफ मॉन्ट्रियल आश्रम. उससे पहले ही गुरुदेव के साथ उसने कोर्स किया था कनाडा यूएस में ही, एंड देन ही केम टू बैंगलोर फॉर सम टाइम टू डू सेवा. ओके, सो इट इज अबाउट द ओल्ड आश्रम. ओल्ड आश्रम के में नई डिवाइन शॉप हमारी चालू हुई थी. सो व्हाट हैपेंड, दिस गाय वाज डूइंग सेवा इन द डिवाइन शॉप, and he was like very, what you say, very good devotee, एकदम बड़ा अच्छा सा devotee. So there was a lady, बालमा. एक आध हफ्ते में जो डिवाइन शॉप चालू हुई, गुरु जी ने उसको सेवा दी, तो एक टर्की की लेडी थी बालमा. She came there and she was very loud. Okay, but she used to do seva very well. हर देखो, this is very interesting. कुछ भी चीज का कुछ खराबी होती है तो कुछ बड़ा अच्छा होता है. तो what she used to do in 2001 or 97, 98 की बात है, not even 2000. So she used to go to city and very loudly give intro talk at the street. You know what you guys are doing in Bangalore? God is sitting there in your city. Just come and meet him. तो ऐसे करके वो बहुत सारे भीड़ को बेंगलोर आश्रम ले आते थे. और वैसे भी यूरोपियन पीपल को देख के इंडियन को थोड़ा सा लगता ही, अरे कुछ तो है, चलो देख के आते हैं. ठीक है. फिर वो पीएस की दुकान पे लेके आती थी, पीएल वी यूज्ड टू कॉल हिम शॉर्ट. तो
बहुत सारी किताबें थे, पूछते थे कि अच्छा कौन सी बुक अच्छी है, तो शी यूज्ड टू गिव सो मेनी बुक्स कि आप ये लो, आप ये लो, अष्टवक्र लो, आप पतंजलि लो, आप नारद भक्ति सूत्र लो, वैसे। एंड पीएस यूज्ड टू से वेयर इज द मनी, पैसे कौन देगा? बोले हाँ दिलवाती हूँ, ऐसे करके कभी कभार, मतलब ऐसे ही शी यूज्ड टू गिव बुक फ्रॉम हिज शॉप एंड ही बिकेम वेरी एंग्री वन डे एंड वन, और सबसे इम्पोर्टेंट शी वॉज वेरी लाउड। ओके, तो वन डे व्हाट ही डिड, उसको एकदम गुस्सा आ गया पीएस को, एंड ही pushed him from the shop. उसने उसको धक्का दे दिया शॉप से एकदम, एंड शी फेल ऑन द ग्राउंड, और शी स्टार्टेड क्राइंग शाउटिंग किया ओ, एंड शी गॉट स्केयर्ड कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। फिर ना बेलमा बोली कि आई विल टेल दिस टू गुरुदेव, मैं गुरुदेव को बताऊंगी। और पियर्स की एकदम, ही बिकेम सो स्केयर्ड, एकदम मतलब वो डर गया वो एकदम से। वो बोला नहीं नहीं नहीं, एंड सडनली उसने, मतलब वो महल में चली गई, उसने पूरा डिवाइन शॉप का सब पूरा बंद किया, एंड ही वेंट इन हिज रूम एंड ही वाज लाइक एकदम पसीने पसीने की, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, आज में से क्या हो गया ये। शी, मैं तो एकदम हल्के से कर रहा था, उसको तो तेज लग गई, एंड व्हाट विल हैपन इफ गुरुदेव नो, गुरुदेव को पता लगेगा तो आई डोंट नो। ठीक है, तो सत्संग था ऐसे ही सुमेरु मंडप में, 1000-1500 लोग टाइप उस टाइम आते थे। तो दैट टाइम गुरुदेव, एवरीबडी, लाइक गुरुदेव न्यू एवरीबडी, स्पेशली दोज हु आर इंटरनेशनल पीपल। तो ही कॉल्ड इन द सत्संग कि वेयर इज पियर्स, आई कैन नॉट सी पियर्स। तो लोगों को भी लगा कि हाँ डेली तो आ जाता है सत्संग में बिफोर टाइम, आज कुछ गड़बड़ है लगता है। ठीक है, तो सत्संग गॉट ओवर। फिर इतने में सीनियर टीचर्स, he brought पियर्स टू गुरुदेव। वो एकदम पहले तो वो आ ही नहीं रहा था, अपने रूम में छुपा हुआ था एकदम, देन he they brought him। ठीक है, वल्मा भी सिटिंग, वल्मा was also sitting in शक्ति कुटीर। शक्ति कुटीर, how many of you know शक्ति कुटीर? It is the place where Gurudev used to stay that time। तो it's very beautiful, आप लोग आओ आश्रम तो you visit that place, मेरू मंडप शक्ति कुटीर, अगर नहीं विजिट किया तो। Okay, तो बलमा was also sitting here there and he was very scared कि यार आज तो गुरुदेव पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। And you know what Gurudev was doing? तो गुरुदेव was having this black grapes in his bowl, और वो ऐसे करके अंगूर खा रहा है, and he was like, अरे मेरे को लग रहा था गुरुदेव गुस्से में होंगे, and but he is looking very अच्छे मूड में। फिर बलमा ने बता दी वो स्टोरी कि गुरुदेव what he did, मेरे को धक्का दे दिया, he pushed me। तो ऐसे गुरुदेव अंगूर खाते बोले, क्या तुमने धक्का दे दिया? अरे धक्का ही दिया ना, और कुछ तो नहीं किया ना। एंड गुरुदेव वाज लाइक, कैसे बच्चों जैसे लड़ते रहते हो? अरे यू हैव ग्रोन अप, जस्ट फोकस ऑन योर सेवा। एंड ऐसे करके खेल खेल में निपटा दिया उन्हें। एंड ऑल द टीचर्स वर आल्सो लाइक कि ये गुरुदेव, he's taking so lightly, and this guy PS was so scared कि क्या होगा आज तो पता नहीं। तो फिर जो टीचर बैठे थे उनके साथ में सुखी भैया थे, तो आई वॉज विद हिम ओनली, ही वॉज शेयरिंग दिस स्टोरी। तो गुरुदेव वॉज शेयरिंग विद हिम, यू नो आई स्पीक विद सो मैनी पीपल, एकदम सेवक से लेकर के एकदम टॉप मिलियनियर, सीईओ, पॉलिटिशियन, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, और सबकी प्रॉब्लम एक ही है। सब कुछ ना कुछ छोटी बातों पे लड़ रहे हैं, या फिर 100 रुपए पे लड़ रहे हैं, फिर कोई 1000 कोई लाख रुपए पे लड़ रहे हैं। कुछ बिजनेसमैन सीईओ के घर जाओगे तो वो करोड़ों में जीरो बढ़ते जाते हैं बस, लेकिन लड़ाई सब एक ही बात की है। सो यू नो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दिस स्टोरी कि फॉर गुरुदेव everything is like a play, and actually that is how we should take it, it's like a play। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे पीएस ने किया था, ही वाज टेकिंग सो मच ऑफ टेंशन कि क्या होगा कैसे होगा, और अल्टीमेटली क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। दैट इज व्हाट वी डू इन आवर लाइफ एट टाइम्स। ओ माय गॉड ये क्या हो गया, अभी तो मेरी जिंदगी बर्बाद, मेरा करियर खराब, ये हो गया वो हो गया। बट इफ यू विल सी फ्रॉम गुरुदेव आइज, नो, यू विल सी कि इट्स ऑल प्ले। लोग बोलते हैं कि ये इतना सक्सेसफुल है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है। It's not success. Real success is
how happy you are, how confident you are, as Gurudev says. So that was very inspiring story for me कि हम लोग मतलब लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली कभी कभार लेते हैं कि अरे ये बहुत सारी टेंशन लेके बैठे रहते हैं कुछ कुछ चीजों की, बट there is nothing in life to lose your peace of mind for, and you should not lose your peace of mind for anything. Okay, so Very beautiful. I hope Uh, these stories were inspiring enough. भैया रिसेंटली वी डिड दिस, हमने ना एक अष्टवक्र की सेशन किया था, उसमें भी Yeah, हर्ड की गुरुजी ने ये बात बोली थी जो आप बोल रहे हो कि जब भी कोई दुख आता है तो विवेक इसमें है कि उस दुख को झाड़ के आप निकलो आगे, ना कि उसको पकड़ के रखो, क्योंकि अगर आपने दुख को पकड़ा तो अपने से दुख तो रहा, वो मतलब अगर आपको लॉस हो गया फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में, तो उसके जस्ट बाद आपने पैसा भी खोया और उसके बाद अपनी खुशी भी खोई, तो चलो पैसा चलेगा कोई बात नहीं, पर खुशी तो रखो अपने पास. दैट वाज वेरी ट्रिकी, मतलब इन दैट सेंस, विवेक. So beautiful way, all the stories आपने back to back, you know, one after another, पेट से पूरा पेट भर गया अभी. So one yes. after another from German ashram, from, you know, all over the world you are Yeah, very interesting. US, Canada, German आश्रम, पोलैंड, इंडिया, सबकी सैर करा दी आपको, सुमेरु, मंडप, यज्ञशाला, इन सच अ शॉर्ट. काफी इफेक्टिव सेशन था, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है काफी. नाइस. Yes, भैया, Okay, Guru but stories, so we connect a lot. I mean, everyone connects a lot because yes, they yes. come to know about the क्या है, you know, Guru. So thank you so much for the all the stories. And भैया, one takeaway for if you want to suggest, जो आप सबको एक Yeah, क्वेश्चन भी था so भैया, if you can take that, just one question कि शनि का कोई पूछ रहे थे कि अगर शनि की दशा चल रही हो तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं एज अ रेमेडी. you know मेरा these, पूछो ना. yeah. आपका भी पूछेंगे मंजुला अभी जी. चलो ये जो एस्ट्रोलॉजी वाले क्वेश्चन है ना, ये नेक्स्ट सेशन में लेते हैं. आई विल कम विद मोर डिटेल. मेरा मेरा अभी मोड ही चेंज हो गया डिस्कशन का. सो जस्ट एंजॉय द गुरु स्टोरीज फॉर नाउ. एंड कमिंग टू माय लास्ट टेक अवे वाली नॉलेज, तो व्हाट आई विल से कि जो फर्स्ट वाली स्टोरी थी, यू रिमेम्बर पहली स्टोरी कौन सी सुनाई थी मैंने? देने वाले, वो बताने वाले कितने हैं, सुनने वाला एक है. हाँ हाँ. गुरु जी इज रियली लाइक बर्डन, मतलब बहुत ज्यादा उन पे लोड आ गया है. तो वी शुड ऑल्सो, जितना भी हम सुन सकते हैं, जितना भी अपनी तरफ से कर सकते हैं, वी शुड ऑल्सो लिसन एंड हेल्प टू पीपल, बिकॉज सुनने में रब बसता है. ऑलवेज रिमेम्बर दिस. ओके, सो जस्ट रिपीट इन योर माइंड 3 times, सुनने में रब बसता है, एंड स्टार्ट लिसनिंग टू पीपल अराउंड यू, एंड यू विल सी that that grace start flowing through you. I tell you, it is very powerful. Okay, so on this note, have a very very happy and prosperous year and keep doing good work. और गुरुदेव का मैसेज भी है इस बार कि थोड़े से चैलेंजेस टाइम आएंगे, थोड़े से ग्रह स्थिति अलग बन रही है. We will discuss in some sessions later, but you just, when you are doing something good for people, then everything he will take care. I tell you, he will take care. Okay, Okay, so see thank you you all भैया. again. जय गुरुदेव. साहिल भैया जय गुरुदेव. प्रशांत जय गुरुदेव. You are Yes. there? Thank you. Yeah, yeah, Ashish, please go ahead. Ashish. जय Yes. गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव एंड हैव अ हाँ, वेरी हैप्पी. एक सेकेंड. साहिल भैया, अगर आप यहाँ पे हैं, जस्ट अ सेकेंड. यहाँ पे मैं अंबरनाथ में आया हुआ हूँ. एवरीवन ओवर हियर इज सो एक्साइटेड, दे वांट टू विश हैप्पी न्यू ईयर. सो एक बार मैं ऑन कर रहा हूँ, सो एवरीवन कैन वॉच. Wow. सो जितने भी लोग हैं, हैप्पी न्यू ईयर. यस, हैप्पी न्यू ईयर. Happy आज New Year. अमरनाथ की टीम ने मुझे इनवाइट किया था एंड आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल कि यहाँ पे Wow. मैंने न्यू ईयर की शुरुआत की. और साहिल भाई, आज के सेशन में बीच पे आके ये सब लोग हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहते थे, सो वी वर हियर. सो थैंक यू सो मच.
Thank you so much, Ambernath team, for inviting me. हमारे हंसा जो दीदी है दीदी Thank you Hello, so Ansa much. ji. Thank you so much. ये सारे लोग हैं. Yes. So, Sahil bhaiya, over to you. It's your session, and thank you so much, and happy New Year. So let's call it a day. Guru night to everyone.